Now I am doing the new share screen. Now share, share. So we were doing the organs of attachment, development of organs of attachment, in which there are various organs of attachment are there. The most important are the acetabulum. Acetabula is plural, and or suckers. इसको नीचे करके कर रहे हैं, विजिबल तो होगा ही आपको. आपको मेरा फेस देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इट डजंट मैटर. मेरे फेस की अभी जरूरत भी नहीं है. सो आई एम स्टार्टिंग. इस तरह से लिखने में ज्यादा सुविधा हो रही है. नो प्रॉब्लम गर्ल्स? ओके, देन वी आर डूइंग इन दिस वे. सो acetabulum or suckers are formed in all adult parasitic flatworms. For this purpose, monogeneous जिसमें एक ही होस्ट है, monogeneous parasites possess opisthophter. It is a particular type of sucker. Opisthophter. This is opisthophter containing suckers. ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसिटाबुलम है. एसिटाबुलम लिवर फ्लूक अगर आपको याद होगा तो आगे पीछे दो एसिटाबुलम की तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं सकर की तरह, वैक्यूम क्रिएट करके. ये बहुत ही मस्कुलर इसका वॉल होता है. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज एसिटाबुलम. ये एसिटाबुलाई और ये एसिटाबुला बहुत सारे डेवलप होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके के. मोनोजेनियस, कुछ मोनोजेनियस हेलमिंथ्स में एक ओपिस्थोप्टर acetabulum डेवलप होता है which contains suckers. These suckers are 8 in diplozoan. These are the different orders of helminth. In diplozoans, they are 8 in number, and in other certain forms suckers भी होता है, hooks भी होता है. For example, 8 pairs in Gyrodactylus, 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 Gyrodactylus. Then in digenous forms, जहाँ पे रुकना होगा आप लोग बोलिएगा, क्योंकि हम लिखते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं. अगर आपको रुकना होगा तो थोड़ा सा बोलिएगा. In digenous forms, like fasciola and cystoma, the digenous forms, they possess suckers as adhesive organs. They possess suckers as adhesive organs. These suckers may be ventral, may be oral. These are the ventral and oral suckers. Example, अगर आपको याद होगा लिवर फ्लूक में वेंट्रल साइड में सकर्स पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एसिटाबुलम, वेंट्रल एंड ओरल. लिवर फ्लूक में दो होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर. एंटीरियर छोटा होता है और थोड़ा पीछे आके एक पोस्टीरियर होता है. तो दिस इज दिस डायग्राम. चलिए इसको अभी हटा देते हैं, डायग्राम्स हम लोग अलग से देखेंगे. The liver fluke has 2 suckers, one anterior and one posterior on the ventral side. liver fluke में या fasciola hepatica में दो होते हैं, anterior and posterior, दोनों ही ventral side में होते हैं. These are the 2 suckers, और one anterior and one posterior on ventral side. Then in paramphistomum, another type of helminth, it is paramphistomum.
fish stomum. More than one suckers are present. Then in tapeworm, Taenia solium, in Taenia solium, the scolex bears either 4 sucking cups. In Taenia as a genus, in genus Taenia बहुत सारे स्पीसीज होते हैं और अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के ये सकर्स एंड एसिटाबुलम का स्ट्रक्चर होता है. इन टीनिया सोलियम दिस स्कॉलेक्स, आप जानती हैं टीनिया का जो हेड होता है वो पिन शेप ट्रायंगुलर होता है जिसको स्कॉलेक्स कहते हैं. दिस स्कॉलेक्स इन टीनिया सोलियम बियर्स 4 सकिंग कप्स. इन सोलियम, टीनिया सोलियम में 4 सकिंग कप्स होते हैं. एक ये पोस्टीरियर हो गया तो इसके पीछे का एंटीरियर होगा. दीज आर द 2 lateral. The 4 sucking cups are there in Taenia solium. Then in Myzophylobothrium, another type of Taenia or another type of trematoda, Myzophylobothrium. In Myzophylobothrium, there are accessory suckers along with these 4 suckers. Then there are lateral suckers or grooves or bothria in Diphyllobothrium. In Diphyllobothrium, there are lateral suckers. They bear lateral sucking grooves which are called as bothria. कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा गर्ल्स. Bothria or lateral sucking grooves are present in Diphyllobothrium. It is a type of tapeworm or of class Cystoda. Then in some other cystodes and nematodes, hooks or hook-like structures also develop. Hooks or different shapes and size के hooks develop होते हैं in some other cystodes and nematodes. Even Taenia solium में भी row of, if you remember the diagram, यहाँ पे ये पिन की शेप, ये 4 suckers हो गए और ऊपर में एक rosellum होता है containing rows of hook. These hooks may be of same size in some species. These may be small and large, forming a circlet. In some cystodes and nematodes, hooks or hook-like structures also develop in or near the cephalic end, which further help in attachment. In Taenia solium, the rosellum, this area is called as rosellum. This one और ये पूरा जो circlet है, this is called as rosellum. In Taenia solium, the rosellus contains a basal circlet of hooks. These are the hooks which are particularly in Taenia solium. One small, one large, smaller and larger hooks are arranged alternatively. एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, इस तरह का सर्कुलेट बना होता है. Then in Dipylidium, these are the names. ये आप अगर examples आपको देना है तो you have to remember. In Dipylidium, caninum. In Dipylidium caninum, several rows of hooks are present around the retractile rosellum. यहाँ पे ये rosellum है, retractile, जो muscular होता है, और जैसे Taenia solium में एक रो था, इसमें कई रो बहुत ही छोटे छोटे hooks के होते हैं. Several rows of hooks are
present around the retractile rosellum. This is rosellum, and these are rows of hooks. ROWS होगा, rows of hooks. So these are the adhesive structures. Then the next adaptation is in reproductive system. The fifth important reproductive system. The entire reproductive mechanism is vastly developed. बहुत ही ज़्यादा developed होता है. Huge or vast reproductive system with capacity of producing lakhs and lakhs of eggs per day or per hour in different helminthic groups. Reproduction is well developed as the parasite lives in the hostile environment. कब host को death हो जाए, कब host से उनको छोड़ना पड़ जाए, there are fair chances of their perishing. So they have developed the enormous reproductive capacity. So overall, the reproductive adaptations can be divided into, categorized into two headings, into various headings. First is efficient reproductive system. Second is hermaphroditism. बहुत सारे helminths hermaphrodites होते हैं ताकि कम से कम उनका बहुत बार तो self fertilization भी उन लोग show कर सकते हैं. So the reproductive system adaptations can be categorized as efficient reproductive system, hermaphroditism, multiplication of reproductive organs, then large egg production, then larval multiplication. And the last is complex life cycle. In 6 measurements these are the 6 important points on which the reproductive adaptations take place. First is efficient reproductive system. Complexity in the reproductive system gradually increases from free living forms to the parasitic ones. This facilitates large number of testes, ovaries, vitelline follicles, etc. बहुत सारे reproductive gonads एक टेस्ट नंबर उनका काफी मल्टीप्लाइड रहता है, टेस्टिस का, ओवरी का, वाइटेलाइन फॉलिकल्स का, एक्सेट्रा का. इन सिस्टोट्स about 90% of available space of body is occupied by reproductive organs. बॉडी का करीब करीब ट्रिमेटोटा का अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर ग्रेविड सेगमेंट का, तो ग्रेविड सेगमेंट में करीब करीब ना मोर देन 90% ये जो ब्रांच ये सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनके के ब्रांचेस धीरे धीरे और ज्यादा मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और सारा फिल्ड इट रिमेन्स फिल्ड विद द डेवलप्ड एग्स. दिस इज अगर एक ग्रेविड सेगमेंट देखें तो करीब करीब मोर देन 90% स्पेस इज फिल्ड विद द डेवलप्ड एग्स हेल्ड इनटू द ब्रांचेज ऑफ द ओवेरियन वॉल. ओवरी का ब्रांचेज इस तरह से फैलते चले जाते हैं और सारा फिल्ड विथ इट रिमेन्स फिल्ड विथ एग्स. Then hermaphroditism. This is another quality that the parasites hermaphroditism. Another specific adaptive feature, the males and females are present in same individual, that is the hermaphrodites. The hermaphroditism is an adaptation advantageous to parasite mode of life to overcome the search of the mate. अपने reproductive capacity को बढ़ाने के लिए mates को खोजना नहीं पड़े, इसलिए करीब करीब सारे helminths, parasitic helminths, they are hermaphrodites. The trematodes and cystodes are hermaphrodite except few like cystoma.
सिस्टोमा एक हेलमिंथ है, विच इज एन एक्सेप्शन. इसमें दे आर मोनोशियस, दैट इज ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं. सिस्टोमा, दे आर द डायोशियस, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं. बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर. फर्टिलाइजेशन क्रॉस भी हो सकता है, दूसरे इंडिविजुअल का गेमेट दूसरे इंडिविजुअल के गेमेट से फ्यूज करे, दैट इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन. बट self fertilization is also very much found in these helminths to facilitate the much more chances of egg production. Then third point is multiplication of reproductive organs. In cystodes, reproductive organs are much more elaborate and one are repeated in each proglotid. Reproductive system repeated होते हैं एक एक segment में to increase, to facilitate the maximum number of egg production. Then each mature proglotid possesses one or two sets of male and female reproductive organs. एक एक segment में एक या दो set male और female reproductive organs present हो सकते हैं. One set is present in tinea solium, whereas two sets are present in diphyllidium. Diphyllidium में in this parasite एक एक segment में two sets of reproductive organs are present. In each gravid proglottid, all other organs or the system degenerate to make room for the uterus, which is greatly enlarged and branched to accommodate a large number of eggs. This अभी भी हम लोग देखे थे, यूटरस का वॉल इस तरह से फोल्डेड होता चला जाता है और ये फिर से प्रोजेक्टेड होता है. ये जो वॉल है, इट इज फुल ऑफ एग्स. एक एक वॉल में पूरे पूरे एग्स भरे रहते हैं और बाकी के सारे ऑर्गन सिस्टम ग्राविड प्रोग्लॉटिड में जो बिल्कुल मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, जो टूट करके कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, विच कम आउट विद द फीसेस, दे बियर नथिंग बट द मैच्योर एग्स इनटू देयर सेगमेंट्स. Another capacity the helminths develop is the production of large number of eggs. Egg production is astronomical. The female Ascaris lumbricoids lays about 2 lakhs eggs per day. Female Ascaris का maximum number है, they 2 lakh eggs they produce per day. Whereas in trematodes, they usually produce a few thousand, 10,000 to 50,000 eggs per hour. बहुत सारे trematodes हैं, per hour 10,000, more than 10,000 eggs they can produce. Cystodes produce very large number of eggs. Tinea solium produces a few thousand eggs per segment. Tinea solium के एक एक segment में varied number of thousands of eggs are produced. High production of eggs is simply to reach the proper destination because a parasite has to face a number of hazards. These are the very common things you can assume. Then the next adaptation is larval multiplication. सिर्फ यही नहीं होता है कि मेल एंड फीमेल बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग एंड स्पर्म, और वो उन they acquire the hermaphroditic condition to furnish room for much more matings and fertilizations. इसके अलावा जब एग जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वी डेवलप होते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में, और लार्वल स्टेज में ही बहुत सारे हेलमिंथ्स फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. So these all acquired conditions are to increase more and more and more type of production of their own type, जिसमें जितना chances हैं उनके पेरिश होने के, उतना ही वे अपने को फ्लरिश करने के लिए different ways they develop, they acquire. जिसमें एक बहुत important characteristic है multiplication at larval stage. In addition to large egg production, method of asexual reproduction at larval stage
is also seen in various helminths. For example, each sporocyst, liver fluke या बहुत सारे flukes का एक larval stage है sporocyst. This sporocyst, before entering into the further stage, each sporocyst can produce itself more than 5 to 8 radia larvae. From each radia, again, now 14 to, from a single radia larva, asexual reproduction of course occurs here. 14 to 20 Cercaria larvae may be produced asexually. In case of cystodes, larval multiplication takes place in some forms, developing a cyst-like structure that is called as hydatid, hydatid, hydatid cyst, developing from a single egg, may contain thousands of squalices. ये एक सिस्ट में, ये स्पोरोसिस्ट का दूसरा फॉर्म है दूसरे सिस्टोड्स में, जिसमें हार्डेटेड सिस्ट डेवलप होते हैं फ्रॉम अ सिंगल एग, एक एग से प्रोड्यूस होते हैं इस तरह के हार्डेटेड सिस्ट, और एक एक सिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्क्वालिसेस डेवलप करते हैं. स्क्वालिसेस इज द प्लूरल ऑफ स्क्वालेक्स. एक स्क्वालेक्स मतलब स्क्वालिसेस बहुत सारे डेवलप हो जा रहे हैं, दैट इज द हेड. और जब ये फ्री होंगे, जब ये फेवरेबल जगह पे पहुंचेंगे, तो एक एक स्क्वालेक्स डेवलप कर जाएगा, ये ग्रो करना शुरू करेगा और मैच्योर हेलमिंथ्स में डेवलप करेगा. सो दीज आर ऑल वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस टू मेंटेन देयर रेस. देन अनदर इम्पॉर्टेंट adaptation is complex life cycle. The complexity of life cycle in which more hosts are involved helps deriving maximum benefits from different hosts and in the proper distribution and dispersal of parasites. These are various ways. Life cycle में भी एक टाइप आया लार्वा का, फिर वो पहले कन्वर्ट, दूसरे टाइप में कन्वर्ट होने के पहले उससे और भी बहुत सारे लार्वा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जितनी ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वो होस्ट के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तक पहुंचेंगे, और जहां पे वो सुटेबली अपने आप को एडजस्ट कर सकें वहां तक पहुंच सकें. तो दीज आर ऑल द वेज हाउ टू सर्वाइव देमसेल्व्स. देन these are the reproductive adaptations. Now comes the penetration glands and histolytic glands development. The sixth sixth category of adaptation is the penetration development of penetration glands, and histolytical glands. Histolytic glands. Histolytic glands. They have got the capacity to penetrate. Histolytic मतलब ये पहले dissolve करते हैं particular glands, particular areas को, और वहाँ उसके लिए ये develop करते हैं histolytic glands और penetration glands, जो particular histolytic lytic enzyme secrete करते हैं, जो उस area को dissolve करता है, and it brings about the penetration capacity of the parasites. In order to penetrate into the host, the parasites have developed certain structures or glands. For example, Miracidia larva of liver fluke has a conical process. इस तरह से Miracidium larva में एक conical hook होता है. यहाँ पे बहुत सारे glands develop कर जाते हैं. This is the conical hook in Miracidium larva, and यहाँ पे ये this area is highly glandular. These glands, they secrete lytic enzymes which dissolve the tissues of the host.
Miracidium larva has a conical process at the anterior end called apical papillae. This is the conical hook or apical papillae. Then another type of glands are a pair of penetration glands inside the body near the anterior end. Penetration glands present होते हैं बहुत सारे forms में. These glands also called as histolytic glands secrete histolytic enzymes that help in dissolving the host tissues to penetrate into it. आप लोग कैसे अनम्यूट हो गई हैं? म्यूट कीजिए अपने को. I've already muted. Unmute कैसे हो गई हैं आप लोग? Now adult worm lack these penetration glands except hookworms. Ankylostoma में ये adult ankylostoma में इस तरह के penetration glands present होते हैं, but इसके अलावा बाकी के adult helminths में इस तरह के पेनिट्रेशन और हिस्टोलिटिक ग्लैंड डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वे अगर प्रोड्यूस करते रहते हैं एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स, तो वो बॉडी को भी, अपने होस्ट पैरासाइट की बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. बट इन एंकाइलोस्टोमा द hookworms there are present these glands in the buccal region whose secretion has anticoagulating and histolytic action. क्योंकि वो ब्लड पैरासाइट है, तो ब्लड को कोआगुलेट करने से रोकने के लिए एंकाइलोस्टोमा में ये ग्लैंड्स, पेनिट्रेशन ग्लैंड और सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. Then another type of glands are present in these parasites are called as cystogenous glands. Cystogenous glands. These are present in most Cercaria larvae. Cercaria larvae. In most Cercaria, a large number of dark or brown cystogenous glands are found beneath the cuticle. These glands help in secreting a protective cyst. These secrete a protective cyst around the Cercaria larva, transforming it into metacercaria. टाइम खत्म हो रहा है, तो जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग अगर फिर से ज्वाइन करना चाहिएगा तो आज टाइम है मेरे पास, अगर छोड़ना चाहिएगा तो हम लोग छोड़ सकते हैं. Now these Cercaria larvae, they encircle themselves with a cyst, converting them into metacercaria. सर्केरिया लार्वा मल्टीप्लाई होते हैं, फिर मल्टीप्लाइड सर्केरिया अपने आप को सिस्ट से इंसर्ट कर लेते हैं और मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. These cysts help metacercaria to overcome unfavorable conditions and protect them till they are finally eaten up by their proper host. Proper host उनको खाए और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम या जहाँ भी उनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंच करके ये बाहर आए और जर्मिनेट करें इनटू द न्यू सिस्ट, इनटू द न्यू हेलमिन. तब तक ये प्रोटेक्टिव सिस्ट ये कवर करके प्रोटेक्ट करके रहता है. So these are the structural modifications or structural adaptations in the various helminths. Now the second category is the physiological adaptations. The physiological adaptations, I'm going on simply reading the notes very slowly so that you can note down the important points. The first adaptation is protective mechanism. 10 minutes के अराउंड है. जब टाइम खत्म होने वाला होगा तो बता दीजिएगा आप लोग, अभी बल्कि बता दीजिए कि आर यू रेडी टू रीजॉइन. जल्दी से बोलिए कि रीजॉइन करिएगा आप लोग, कि आज छोड़ देंगे जहां बंद होगा वहां. कोई गर्ल छोड़ देंगे. आज छोड़ दें तो ठीक है. अब 8 मिनट और बचा, 8 मिनट के बाद बंद कर देंगे हम लोग. द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ओके, किसी को कुछ बोलना है? नो मैम. ओके.
Then come to the physiological adaptations. The first is protective mechanism. Most of parasites live within the body of the host and hence have to protect themselves from various substances produced by the host. For example, the parasites living in alimentary canal of host has to protect itself from action of digestive juices of the host. The tapeworm एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा है कि किस तरह से ये डाइजेस्टिव जूसेस को काउंटरैक्ट किया जाता है. द टेपवर्म accomplish this by stimulating the wall of the gut to produce mucus. पहले डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होने के पहले टेपवर्म के ग्लैंडुलर सेल्स इस तरह के फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस बनाते हैं जो कि गट के वॉल को म्यूकस बनाने के लिए सिक्रीट एनहांस करता है. तो वो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करने लग जाता है पैरासाइट के लिए, which then forms a protective clothing around the parasite. Then another important feature is by secreting anti-enzymes. Anti-enzymes are secreted to neutralize digestive enzymes of the host. That is, in order to protect themselves from being digested by the host digestive enzymes. The parasites produce some substances which inactivate the host digestive enzymes. Green, it is the scientist GREEN. Green in 1957 reported presence of trypsin and chymotrypsin inhibitors in the body wall of ascaris. Ascaris में trypsin और chymotrypsin को inhibit करने वाले factors report किया है Green ने 1957. The parasites continuously renew their protective body covering. बार बार वे अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग, बॉडी की कवरिंग को बार बार रिन्यू करते जाते हैं. एक बार जूसेस डैमेज करते हैं फिर उनको तुरंत रिन्यू कर लेते हैं पैरासाइट्स. Lime cells in the body wall of tapeworm neutralize the acids produced by the host. Tapeworm की बॉडी में बहुत लाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एसिड्स प्रोड्यूस जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होस्ट का, उनको न्यूट्रलाइज करते जाते हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस द अल्कलाइन जूसेस. द पैरासाइट्स पॉजेज अ हाई रेंज ऑफ pH टॉलरेंस from 4 to 11, 4 से 11 तक का pH का tolerance capacity the parasites they develop. The blood parasites are known to withstand the effect of antibodies and phagocytes by some mechanism. It is not known how they do, but blood parasites, antibodies और phagocytes के reactions को counteract करने के capable होते हैं. Now the second, these are the protective mechanism of physiological adaptation. The second physiological adaptation is in nutrition. The nutritional requirement of the parasites are fulfilled by the host. The trematodes and nematodes, which possess an alimentary canal, though highly reduced, feed on both digested and semi-digested food. ये parasites अपने आप में एक स्पेशल कैपेसिटी डेवलप करते हैं कि फुल्ली डाइजेस्टेड फूड को भी ये होस्ट का एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सेमी डाइजेस्टेड फूड को भी. तो सेमी डाइजेस्टेड फूड को फुल्ली डाइजेस्ट करने के लिए ये पुअरली डेवलप्ड गट भी, एलिमेंट्री कैनाल भी इनमें होता है जिनमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन को करने में हेल्प करते हैं. इन सिस्टोड्स, दैट इज इन टीनिया, elementary canal is absent. They feed on digested food only. In microtriches, teguments, the microtriches, tegument, these are special organs which help in absorption of food. Microtriches, triches बोलिए या microtriches बोलिए, TRICHES, microtriches and tegument itself, the protective covering itself, help in absorption of food. Then third adaptation lies in the respiration. The respiration is mostly of
anaerobic type, and this respiratory specificity also helps in parasitic adaptation. The pH tolerance of the parasite is very high, that is from 4 to 11. The intestinal parasites live in an environment completely devoid of free oxygen. The respiration is of anaerobic type, consisting of extracting oxygen from the foodstuff. They have got a very specific capacity. ये foodstuff से oxygen absorb करते हैं और anaerobic respiration show करते हैं, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल है. ये होस्ट पर ही डिपेंडेंट है अपने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए. In absence of oxygen, energy is obtained by the fermentation of glycogen, in which glucose is broken down into lactic acid. ये अगर आपको याद होगा तो आप लोग पढ़ी होंगी ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर ही नहीं करते हैं. दैट इज द anaerobic type of respiration. Then fourth adaptation is osmoregulation. The osmotic pressure of body fluid of endoparasites, especially in case of trematodes, is almost the same as that of the host, so that there is no necessity of osmoregulation. Osmoregulatory capacity काफी less developed होता है, क्योंकि जरूरत नहीं है. ये उतना ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं जितना उन बॉडी को जरूरत हो अपने होस्ट से. But in intestinal parasites, in intestinal tapeworms, the osmotic pressure is slightly higher than that of surrounding medium. Osmotic pressure ज़्यादा होने से ये पानी जो डाइजेस्टेड फूड को एसिमिलेटेड फूड से पानी को ये इनहिबिट करते हैं या अंदर आने से रोकते हैं. This permits absorption of nutrients through their body wall as they lack alimentary canal. So with this ends, आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं. अभी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस काफी ज्यादा हैं. 4th तक हम लोग खत्म कर रहे हैं. Then in the next class we will do the periodic appearance, neoteny, high fertility, then transfer of eggs, the active and passive transfer, use of host hormones.